j'écris du fond de ma prison à Sheikhupura au Pakistan où je vis mes derniers jours, peut-être mes dernières heures. C'est ce que m'a dit le tribunal qui m'a condamné à mort. J'ai peur. J'ai peur pour ma vie, pour celle de mes enfants et de mon mari qui souffrent. À travers moi, c'est toute ma famille qui a été condamnée. Je m'appelle Azija Bibi. Je suis une fille de rien, comme on dit ici. Une simple paysanne d'Itanwali, un minuscule village du Pendjab dans le centre du Pakistan. Je n'ai jamais tué, jamais volé. Et pour la justice de mon pays, j'ai fait bien pire. Je suis une blasphématrice. Je suis chrétienne, je crois en mon Dieu, mais chacun doit être libre de croire à qui il veut. Je voudrais enfin m'expliquer, crier la vérité. Have you met Sidra? No. No, she's married now. Oh, we don't Maybe check. Quasiment à la naissance de France 24, j'étais intéressée par cette chaîne de télévision qui avait comme vocation de couvrir l'actualité internationale. C'est ce qui m'a toujours intéressée, la politique étrangère. Et du coup, j'ai postulé à cette chaîne et puis le poste qui se présentait à moi était un poste de présentatrice de news. Alors j'ai accepté dans un premier temps, sachant que dans cette chaîne, très vite, et avec l'expérience que j'avais acquise au préalable, j'irais vite sur le terrain couvrir les conflits internationaux. Et puis au bout de 8 mois, le directeur de la rédaction m'a proposé d'ouvrir un bureau au Pakistan. Et du coup, j'ai tout de suite dit oui. Donc, je suis arrivée avant l'été 2008 à Islamabad. J'ai été liée au Pakistan pendant 4 ans. Je me suis sentie d'une certaine façon pakistanaise là-bas, puisque je n'étais plus du tout résidente en France. Et je n'ai pas été déçue parce qu'effectivement, ce pays est riche en enseignements et plein de surprises. I think it's the power of violence. The power of violence is like in a classroom in any university in the world. Mm-hmm. You think of a classroom with 60 students, now you enter one with a machine gun. And everybody will do whatever that guy says. And if somebody tries to say anything and shoots the first one, all the others will just follow command. Mm-hmm. So unfortunately, I used to think of Pakistan as a country that is, in this moment, is somehow kidnapped. It cannot show all the goodness it has. You have to be living there to see it. For the eyes of an outsider, it's very hard to imagine to what extent can Pakistan be part of your heart.
But I've been living there for 11 years, and I can assure you that in very few places on this earth I have known the goodness and I have known the human quality I have found in Pakistani people. The Pakistani people are the ones who are suffering these fundamentalists. Let us not forget it. The people who are getting killed are Pakistanis. The people who cannot live at peace are Pakistanis. The security guards who are killed at airports, at bus stations, or the innocent people who are killed in a market are both Christians and Muslims, Pakistanis. Dozens of Christian worshippers were killed in Pakistan on Sunday as 2 suicide bombers blew themselves up among worshippers. More than 50 people are reported dead and dozens more have been wounded in a suicide attack on Pakistan's border with India. The attack occurred at the historic All Saints Church in Peshawar as worshippers left church following Sunday Mass. The bomb disposal squad head said each suicide vest contained at least 6 kilograms of high explosives and ball bearings to maximize casualties. The 2 attackers detonated their vests within seconds of each other as they stood among the crowds. A senior Pakistani Taliban commander has claimed responsibility for the blast, which happened after a daily ceremony at the Wagah border crossing that always attracts crowds. J'ai dû traiter évidemment des talibans, du terrorisme, de Ben Laden et par chance la rédaction me laissait aussi la liberté de pouvoir traiter de sujets de société ou de consommation ou de sujets plus quotidiens pour mieux connaître ce pays qu'est le Pakistan qu'on connaît assez mal finalement vu de l'extérieur. Alors avec nous en direct d'Islamabad, Anne-Isabelle Tollet. Anne-Isabelle, bonjour, on vient tout juste de regarder votre reportage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez réussi à décrocher cette interview? D'abord Valérie, il faut savoir que ça a pris 1 mois. Donc j'ai demandé à l'une de mes sources ici à Islamabad de me trouver un combattant, militant, taliban ou appartenant au réseau Al-Qaïda qui accepterait de donner une interview à une télé étrangère. In questi giorni la comunità internazionale segue con grande preoccupazione la difficile situazione dei cristiani in Pakistan, che spesso sono vittime di violenze o di discriminazione. In modo particolare oggi esprimo la mia vicinanza spirituale alla signora Azija Bibi e ai suoi familiari, mentre chiedo che al più presto le sia restituita la piena libertà. Alors le tout début, c'est que j'ai lu un matin, comme tous les jours d'ailleurs, la presse locale, et j'ai vu un tout petit encadré, c'était pas la une du journal, qui disait « Une femme vient d'être condamnée à mort pour blasphème ». J'ai proposé un live à ma rédaction en disant « C'est incroyable, c'est la première fois qu'une femme est condamnée à mort pour blasphème et il semblerait que la raison soit seulement parce qu'elle aurait bu un verre d'eau dans le puits des musulmans ». हम बहुत पोलाइट लोग हैं, हम तो अमनो अमान वाले लोग हैं, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, नबी की बेअदबी और गुस्ताखी हमें ताकत देती है, हमारे सीने को छलनी कर देती है, हम किसी गुस्ताख और बेअदब को कभी भी जिंदा देखने गवारा। Mais par chance, j'étais très proche de Shahbaz Bhatti, qui était à l'époque le ministre chrétien des minorités au Pakistan, et qui, me connaissant bien, m'a demandé de parler de cette histoire en Occident. Et grâce à lui, j'ai eu accès finalement facilement à toutes les informations, à sa famille, à sa belle famille, à l'endroit où les choses s'étaient passées, parce qu'à l'époque c'était très opaque, il y avait assez peu d'informations et quand on est journaliste étranger, les autorités pakistanaises font exprès de nous interdire tout accès, de ne nous donner aucune information. Pouvez-vous expliquer aux téléspectateurs de France 24 ce qu'est un blasphème selon la constitution pakistanaise? Selon le décret 295B, quelqu'un qui insulte le livre sacré des musulmans, le Saint-Coran, doit passer le reste de sa vie en prison.
Selon le décret 295C, si quelqu'un agit, pense ou fait quoi que ce soit qui insulterait le saint prophète de l'islam, il est alors puni par la peine de mort. He will punish with the death penalty. Ce que je vous propose, c'est de rencontrer Azija Bibi dans sa prison, de l'interviewer, de recueillir son témoignage et de l'écrire à la première personne. Et c'est effectivement ce que j'ai fait avec Ashik. Nous sommes allés plusieurs fois à la prison, là où était Azija Bibi, à l'époque à Sheikhupura, près de Lahore. Avant chaque visite, je disais à Ashik, son mari, écoute, aujourd'hui, je voudrais par exemple que tu demandes à Azija qu'est-ce qu'elle voudrait dire au monde entier. C'est comme ça qu'on a écrit ce livre. Identification absolue en Azija Bibi était nécessaire pour pouvoir écrire en son nom. Mon cher Ashik, mes chers enfants, c'est une grande épreuve que vous devez affronter. Ce matin, j'ai été condamnée à mort. Je vous avoue que lorsque j'ai entendu le verdict, j'ai pleuré, mais dans le fond, je n'ai pas été surprise. Je ne m'attendais pas à la clémence ni au courage des juges qui ont subi la pression des mollahs et du fanatisme religieux. Tu le sais, Ashik, comme tu sais que je suis incapable de violence et de cruauté. Mais parfois, j'ai une forte tête. Pour ce qui est de mon jugement, cela n'a pas été long. J'ai été condamnée à la peine de mort en quelques minutes. Je ne sais pas encore quand ils vont me pendre, mais soyez tranquilles, mes amours, j'irai la tête haute, sans peur, parce que je serai en compagnie de notre Seigneur et de la Sainte Vierge Marie, qui vont m'accueillir dans leurs bras. Mon bon mari, continue à élever nos enfants comme j'aurais voulu le faire avec toi. Ashik, mes enfants bien-aimés, je vais vous quitter pour toujours, mais je vous aimerai pour l'éternité. In 2010, I went to Sheikhupura jail. I am meeting with Azija Bibi. We just asked for half an hour meeting, but it takes 3 hours meeting. She was happy to say something after a long time. Nobody was asked Azija for their defense. When I was meeting her, she said after 18 months of imprisonment, she was given a letter with the death sentence. Nobody was there to ask what was happened. This is totally against the law. If there is a law, then there must be a justice. देखो जी पहले तो पाइंदे ने सन दसिया नहीं उन्हें कोई गलबात नहीं की थी साढ़े नाल सानू नहीं उन्हें दसिया लेकिन इस तरह खोलती गल जी सी खुल गई कि आसिया बीबी ने जी साढ़े नबी नूं इंज इंज कहा वा उन्होंने फिर मैं पूछा उन्हें आख्या मैं कोई गलबात नहीं की थी इन्होंने नबी बारे इन्होंने आप ही कहा है। खालसा जो होता है ना फ्रूट खाने वाला तोड़ने के लिए गई थी दिहाड़ी पे ना, तो हम लोगों को मालूम नहीं था कि बाहरी जगह ना लड़ाई झगड़ा हुआ औरतों में। वो अकेली थी, 10 औरतें थी, उन्होंने मिलजुल के ना झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। कारी थे, उन्होंने लड़कियां पढ़ती थी ना मौलवी से, उन्होंने आगे कारी को बता दिया। 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने सब कुछ कर लिया। हम लोग उधर अकेले थे गाँव में। तो अरेस्ट होने से पहले तो यही गल्लां बातां होईयां जिहड़ियां मैं तुहानूं दस चुका। ਜਦੋਂ ਇਹ 5 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨਾ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਆ।
जी खेत में से पकड़ के लाए थे और जिन्होंने पकड़वाया था ना उन्हीं का घर था मुसलमानों का, उधर ले गए, उधर ही पुलिस वाला आ गया था थानेदार ना ननकाने से। बहुत बुरा था, इन लोगों ने कैके भी लगाए हैं, तालियां भी लगाई हैं, बल्कि जिस तरह किसी का मजाक उड़ाते हैं, बड़ी बेइज्जती भी हम लोगों की हुई है। उन्हें पूरे पिंड च घुमा गया, पिंड के सेंटर च लै गया, बच्चियां नूं इन्हां नूं विचारियां मारते मूरते रहे। माँ के कोल सी इस टाइम छोटी जी हैगी सी ये बच्ची जी, तो इन्हां नूं भी मारिया कुट्टिया, उन्हें पानी शानी मंगया, इन्हें मैनूं दस्सिया सी कि अबू ना पानी अम्मी ने मंगया, तो उन्होंने फिर उल्टा जिहा कोई लफ्ज़ कहा कि असीं इहनूं पेशाब पिआने आ, तो इहो ਜਿਹੇ किस्से कहानी उन्होंने उत्थे कीते। नहीं उन्हें नहीं कहा, इन्होंने जबरदस्ती उन्होंने मार कुट के थाने 'च भी लै गए। उन्होंने कहा तू हुण भी मन जा, तो असीं तैनूं मुस्लिम कर लैंदे आ, ते तेरी शादी किते होर कर देने आ, तैनूं छड्ड देने। उन्हें आख्या मैं कहा ही नहीं, मैं क्यों कहां। सब खुश हैं? हालेलुया हालेलुया। आए फिर सब खुदाम यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली। अब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह है। अब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह है। अब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह, मेरा बादशाह। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह, मेरा बादशाह। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। जलाल दा बादशाह आवे। In 3 hours meeting, even a single time, Azija Bibi did not disclose any kind of willingness that she was mistakenly stated these words. She all the time denied. She said, I never said these words. She said, I was blandly involved in this case. And even she has nothing to do with the blasphemy. The problem is that this law can be used against you, and enough that a few people gather and make the accusation on you, that even if you have nothing to do about it, that they will bring you to court, and they can provoke the anger of the people. They can play with the sentiments and the feeling, and they can provoke a situation that later on, well, everybody can regret. Azija's troubles began here in her village. Hers was the only Christian household. She was working in the fields alongside local Muslim women. They claimed she insulted the Prophet Muhammad. She says she was falsely accused to settle an old score. Human rights groups say that's often the case with the blasphemy law. Cette histoire est tellement ahurissante que sans avoir les éléments, on ne peut pas saisir comment on peut se retrouver d'un seul coup condamné à être pendu pour avoir bu un verre d'eau. C'est juste ahurissant. Et elle connaissait à quel point là-bas c'était condamnation à mort, parce que de toute façon, si c'est pas la justice qui vous condamne, ou la justice qui vous tue, c'est la rue qui vous tue. Avoir une condamnation sur soi de blasphème, c'est une condamnation tout court. On ne peut plus vivre librement et en toute sécurité au Pakistan. Mon impression quand je suis arrivée à Itanwali n'était pas excellente parce que je me suis fait très mal accueillir d'abord. J'y suis allée toute seule avec mon traducteur pakistanais, mais il y avait une défiance à mon égard, non pas parce que j'étais une femme, mais parce que j'étais occidentale et parce que je venais m'intéresser à cette histoire d'Azija Bibi. Donc dès que je suis arrivée dans le village, il y a des enfants qui sont arrivés vers moi, et puis là j'ai commencé à dire, à chercher la maison d'Azija Bibi, parce que je voulais filmer la maison et rentrer dans sa maison, voir où elle vivait, où elle habitait. Et très vite, les visages se sont fermés et j'ai reçu des coups de cailloux et des oranges pourries dans le dos, ici ou là.
Et j'ai senti que la population se faisait un peu hostile et pressante à mon encontre. Et du coup, j'ai immédiatement demandé à voir le mollah du village. वहाँ क्योंकि जब हम थाने में गए थे वहाँ उन्होंने पूछा कि कौन होगा, क्योंकि ये मामला ऐसा था कि इसमें जितनी कोई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस की खातिर जो भी थोड़ा सा भी अपना हिस्सा मिलाता है तो अल्लाह उसको बड़ा अजर अता फरमाते हैं। और इसके बहुत सारे यानी अब वक्त नहीं है तो इस पर वो सामने रखते हुए कि हमारा हिस्सा भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस की खातिर हो जाए, तो इसमें मैंने अपना नाम पेश किया। उन्होंने लिख लिया बाकी अपना फैसला। हाँ, किसी ने ये दबाव कुछ नहीं। Il était d'accord pour me donner une interview au sujet d'Azija Bibi. Bon, durant cette interview, il a fait preuve d'une mauvaise foi à toute épreuve, en m'expliquant qu'il ne pouvait pas répéter le blasphème qu'avait commis Azija Bibi, sinon il commettrait lui-même un blasphème. Donc ça avait ni queue ni tête cette interview, il ne savait pas, il n'était pas là sur place, mais bon, il était sûr qu'Azija Bibi avait blasphémé. अगर हाई कोर्ट ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇhtਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਤਲਬ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। At the village mosque, they want the death sentence carried out. The local imam says he cried with joy when Azija was sentenced. He told us she'll be made to pay one way or the other. अगर कानून के मुताबिक उसको सजा नहीं दी जाती, If the law punishes someone for blasphemy and that person is pardoned or released, then we will take the law into our own hands. ये है कि हम भी कानून को हाथ में ले लेंगे। For now, Azija remains behind bars here at Shekhapura jail, where she's being held in isolation. The cleric, the man who had accused her, was saying that she had committed blasphemy in the honor of Holy Prophet. And that person did not listen to it. He stated this in the FIR, but some other told him that Azija has committed this blasphemy. In normal cases, such evidences are not acceptable, and such version of the complainant goes in favor of the accused. It has a history. It was long and known discussion. The owner of Halsa Garden, the Berry Garden, he was very noble to her. He was very kind and also gave her chance to hire some women for the picking of falsa. So this was also again a jealousy among the co-workers, that how a Christian lady can have a leading role or can be in charge of laborers' women. You know, here in our country, we the Christian are nobody and nothing against the Muslim majority community. कलमा जिथों बेड़ा पार चलिया ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਲੈ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਲਮਾ ਤੋੜ ਪੜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। Asma and Mafia, the two ladies became annoyed from Azija Bibi. They used abusive language against Azija. It was unbelievable for Azija that why these ladies are using slang language against her. After few while, these two women started shouting that Azija Bibi has passed some derogatory remarks against Prophet Muhammad, because this was the only chance for them to involve Azija or give her a lesson. There is no eyewitnesses there, only these two ladies.
Azija s'est retrouvée seule face à toutes ces femmes musulmanes qui l'accusaient d'avoir fait quelque chose de terrible. Et elle, de bonne foi, disait, mais enfin, il n'est pas écrit dans le Coran que les chrétiens n'ont pas droit d'utiliser la même vaisselle que les musulmans. Donc, je n'ai rien fait de mal, je ne comprends pas. Prosecutors say Azija Bibi insulted Islam and the Prophet Muhammad. They say the alleged incident happened when she was picking berries in this field in the town of Itanwali, just about 2 hours west of Lahore. Court records show Azija was sharing a bucket of drinking water with fellow workers, but when she dipped her cup, her fellow workers refused the water, saying it had been touched by a non-Muslim woman. Et après cette interview, voilà, je suis allée dans la maison d'Azija Bibi. J'étais mal vue encore par les villageoises, les voisines qui me regardaient comme ça d'un seul œil, parce que les villageois n'aimaient pas du tout le fait qu'on s'intéresse à cette chrétienne, parce que pour eux c'était rien, une chrétienne, c'était moins que rien, et donc là ils ne comprenaient pas cet intérêt pour cette femme-là. Et surtout, ils m'ont tous dit unanimement qu'ils étaient pour qu'elle meure, parce que elle menaçait l'islam, et donc qu'ils se sentiraient soulagés le jour où elle sera pendue. Cette visite dans le village d'Itanwali a été fondamentale pour que je puisse vraiment raconter comment était sa vie là-bas, comment ça s'est passé dans le champ, parce que je n'y étais pas. Mais quand j'ai vu certaines femmes qui étaient hargneuses en me parlant d'Azija Bibi, mais avec une espèce de haine féroce, qui mérite de mourir et tout, j'ai pas eu de mal à imaginer ce qui s'était passé dans le champ, d'autant qu'encore une fois, je connaissais vraiment bien le sort des communautés chrétiennes au Pakistan, et j'avais déjà fait avant cette histoire d'Azija Bibi plusieurs reportages sur les minorités chrétiennes au Pakistan. On the first day, villagers beat Azija Bibi brutally. They put some leather rope in her neck, so pushing her like dog and beating her brutally. From here the thing started. It was illegal act. So these things lead this situation. Qari Muhammad Salam said he is not sure if she is released, nothing can be said about her security. Any Muslim can attack her and kill her. And the other man, namely Abdul Rashid, he said if she is released by the court, they will lodge protest, they will lay their lives. They prefer being killed in this movement, but resist the court judgment in her favor. Azija Bibi is a Christian. The women argued. Mafia Sitar and her sisters say they were there and heard Azija's insults. She said your Muhammad had worms in his mouth before he died, Sitar told us. A crude way of saying Muhammad was no prophet. Should Azija Bibi be hanged? In her hometown, the verdict? To that? A unanimous yes. Azija and other women used to work at this garden, which is now removed, and this crop is grown. These are belong to Idris, who is also one of the witnesses before the court against Azija. When Azija tried to go and fetch water for them, they stopped her. And they said, no, we won't drink water brought by you. There was an altercation between Azija and all other women. All other women were Muslims and they had one version. On the other hand, Azija was one, and she supposedly tried to defend herself. After that, many people gathered in the village. Azija was pressurized by the mob as there she was single.
पर ये झूठा पर्चा करवाया। हमारी पहले भी उनके साथ लड़ाई झगड़ा था, एक दफ़ा नाली की वजह से हुआ और मेरी एक बकरी चोरी की थी उन्होंने और काफ़ी सारे मेरे नुकसान किए हुए थे। थाने लाए थे, उस वक़्त इन्होंने गलत किया था मेरे साथ और मुझे 3-4 चपेड़ें भी लगाई थी और जब गांव में मुझे लेके आए फालसा से तो उस वक़्त भी इन्होंने मेरे गले में पटा डालने की कोशिश की थी ताकि हम इसको मार दें। Et parce qu'elle répondait, plutôt que de faire profil bas et de baisser la tête en disant « désolé, je referai plus », eh bien, ça s'est envenimé et du coup, le mot blasphème a fusé. Et il a suffi qu'il soit dit une fois pour que, boum, d'un coup, une chape de plomb tombe sur la tête d'Azija Bibi et que là, ça, du coup, ça implique que le mollah doivent intervenir dans cette histoire, qu'il doit y avoir une plainte déposée au commissariat de police. If we observe and read witnesses of those women, there is a fickleness, change of statements in that which the court totally ignored. But she is given the maximum punishment which she can be given. दो तीन दिन बाद ये लोग इकट्ठे हुए हैं, उस दिन दोबारा मेरे पास आई कि किसी तरह मेरी जान छुड़वाओ, मैं मतलब ये कह दो ये इसने नहीं कहा ये वो। मैंने कहा नहीं, ये तो नबी पाक की शान में गुस्ताखी है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। इसलिए वो उस दिन वो आई थी। सुने नहीं, हम बाहर थे साइड पे, मेरे पास आकर मेरे सामने इकरार किया उसने कि हाँ मैंने ये कुछ बोला है। Mes enfants, ne perdez pas courage ni la foi en Jésus-Christ. Des jours meilleurs vous souriront, et là-haut, quand je serai dans les bras du Seigneur, je continuerai à veiller sur vous. Achik, je t'ai aimé dès le premier jour, et les 22 années que nous avons passées ensemble ont prouvé. Je n'ai jamais cessé de remercier le ciel de t'avoir rencontré, d'avoir eu la chance de faire un mariage d'amour, et non un mariage arrangé, comme c'est la coutume dans notre Provence. Nous avions tous les deux des caractères qui s'accordaient, mais le destin est là, implacable. D'infâmes individus se sont mis en travers de notre route. Te voilà seul, avec le fruit de notre amour, mais garde le courage et la fierté de notre famille. Vous savez pourquoi je vais mourir, et j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir de partir si vite, parce que je suis innocente et que je n'ai rien fait de tout ce dont on m'accuse. हम वो लोग नहीं है जो आर्मी के खिलाफ खुदकुशियां करे, हम वो नहीं है जो पुलिस वालों को हिट करे, लेकिन गुस्ताख को बचाने के लिए जो आएगा वो आ जाएगा। जब पकड़ा था तब मेरी मम्मा ना, जब पकड़ने आए थे ना उनको, तो तब मेरी मम्मा रो रही थी बड़ा ज़्यादा। तब मेरी मम्मा उधर थी तो वो पूछ रहे थे आपकी मम्मा कहाँ पे हैं। तो हम उनको कह रहे थे कि हमारी मम्मा इधर नहीं है, हमारी मम्मा वहाँ पे फालसा तोड़ने गई। पहले हमने नहीं बताया उनको, जब वो बार बार पूछ रहे थे फिर हमने बताया था। हमने कहा हमारी मम्मा वहाँ पे, जब वहाँ पे वो गए थे उनको ना उनको मार के लेके आया, तो उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने मारा था, उनके कपड़े भी फाड़े हुए थे। जब लेके आए तो उनको हमने रोका है बहुत ज़्यादा, पर वो लेकिन नहीं रुके। फिर हमने रोका, मैंने अपनी मम्मा का बाजू पकड़ा है तो उनको हमने रोका है, तो तब रो रही थी तो मैंने अपनी मम्मा का बाजू पकड़ा और मैं उनके साथ, हमने उनके कपड़े चेंज करवाए और फिर हम उनके साथ उधर गए जहाँ पे वो लेके जा रहे थे हवेली में। हम वहाँ पे गए तो मेरी मामा ने उनसे पानी मांगा तो उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने उनको बड़ा मारा, उन्होंने मुझे उठा के द्वार के साथ मारा। मैंने उनसे पानी मांगा, उन्होंने आगे से कहा हम नहीं सही कुत्तों को पानी देते। Let's
they are intolerant as well as violent. They are interested to kill the person without knowing that he or she is guilty or not. Il y a beaucoup de gens, des gouverneurs, des avocats, qui m'ont téléphoné en me disant « Faites attention, soyez discrets, parce qu'ici c'est un sujet très sensible, il va vous arriver des ennuis. » Donc je vous conseille d'abandonner cette histoire. Donc j'ai bien compris la mise en garde, parce que ça faisait plus de 3 ans que je vivais au Pakistan et je savais que ce pays est capable de tout et que moi-même je pouvais avoir des problèmes. Un malheureux, malencontreux accident de voiture, par exemple. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prévenu tout le monde en disant ok, j'arrête, j'oublie cette histoire, elle ne m'intéresse pas. Je ne m'intéresse plus à Azija Bibi parce que de toute façon, j'avais compris que je n'arriverais jamais à la voir en prison. Et ça s'est su aussi très vite parce que des amis avocats m'ont appelé. J'ai entendu dire que tu ne t'intéressais plus à cette histoire, c'est bien, c'est mieux pour toi, etc. Donc du coup, j'ai continué à travailler sur cette histoire, à voir la famille d'Azija à Lahore de manière très discrète, parce que là, il n'était plus question qu'on sache que je continue à travailler dessus, parce que j'avais reçu quand même ces avertissements comme de vraies menaces. Et de fait, dès que le livre est sorti en France, j'ai fait pas mal de promotions dans les médias. Il y a eu des dépêches AFP en anglais. Ça a été entendu là-bas au Pakistan. Et du coup, des membres du parti religieux, le Jamaat Islamia, est allé dans ma maison de l'époque, a demandé à me voir, a dit que j'avais écrit un livre contre l'islam et que je critiquais cette loi du blasphème et que du coup, il allait m'arriver la même chose qu'à Shabazz Bati et Salman Taseer. Already, Islamic groups are out on the streets, promising anarchy if Azija is freed. Her case has provoked some debate about reforming the blasphemy law, but the government would have to face down the hardliners. There seems little appetite for that. Her family, too, is at risk, forced into hiding, so we met them after dark. Her husband, Ashik, is exhausted from being on the run, from guarding the children at night, and from threatening phone calls. Now the time at present it's difficult to defend such kind of case. There is a recent example, one of our colleague, Mr. Rashid Rahman Khan, he was following up a case of blasphemy since last 6 months. 2 unidentified attackers came in his office and shoot him. They spread or they disseminate some pamphlets by this warning that if anyone try to defend the case of blasphemy in the court must be killed. This is a sign and this is a message from the religious extremists. So we are afraid. He was a very good lawyer as well as human rights activist and known to everyone in the city of Multan, where Azija Bibi is confining now. The problem is that there is fear. The problem is that the violence seems to have always their way around. And therefore, the fight is not so much for Azija Bibi's freedom, but as it is for making a legal system that is fair for innocent people. आज मौजूद हैं आसिया के खावन जनाब आशिक मसीह, जिनका तल्लक चकतीन गांव इटावाली से है। ये ज़िला ननकाना साहिब में
जो पंजाब के दारुल खिलाफा लाहौर से. When I took their interview, the case was very fresh, and many people were still hunting them also, and they were also hiding and running from one place to another. They were terribly afraid because they were harassed, no? They were followed by different people, so they were hiding. The younger girl said she is afraid to go to school because the other children make questions about the mother. So where are you safe? And who can you say, okay, this man is safe, this is unsafe? You are afraid of everybody. Anybody can kill you. Ce qui se passe, c'est que les extrémistes et les talibans au Pakistan militent pour que cette loi soit maintenue telle qu'elle. Le gouvernement pakistanais, même s'il avait souhaité à une époque réformer cette loi, faire en sorte qu'elle soit un peu allégée, a tout de suite compris, a reçu des menaces des extrémistes, des partis religieux, des talibans, qui ont promis aux autorités pakistanaises, si vous abolissez cette loi ou si vous la réformez, on vous promet le chaos dans tout le Pakistan. Les manifestations ne sont pas légion au Pakistan, mais quand il s'agit de défendre la peine de mort en cas de blasphème, des centaines de milliers de Pakistanais affichent une détermination sans faille. Ici à Islamabad, mais aussi à travers tout le pays, les slogans fusent. Depuis qu'il est question de réformer cette loi qui condamne tout citoyen suspecté d'avoir insulté l'islam. On est des gens de paix, mais si on nous cherche, il est clair qu'on va nous trouver. Nous, on a la chance d'être de bons musulmans, mais il faut m'aider pour que notre pays suive la bonne voie de l'islam. If you are accused of having blasphemed against Quran, obviously you inflate the heat of the people to the point that they will not think anymore, because they are people ready to die for their faith. Not only ready to die, they are people ready to kill. Therefore, you are touching the most intimate of their livelihood, that which is a non-negotiable for them. Because of their faith, they are ready to kill even a daughter, even a husband, a wife, to betray a close relative, to betray for us, but to be faithful to their faith for them. Human rights groups have long blamed Pakistan's blasphemy laws for persecution and violence against religious minorities, like this attack last year on a Christian village and recent bombings of minority Muslim mosques. Activists say the government has refused to amend the law for fear of a backlash from Islamist groups and their followers, who deem scrapping the law as un-Islamic. Elle, le symbole, l'emblème de cette loi du blasphème. Et donc, tout s'est cristallisé sur Azija Bibi pour parler de cette loi du blasphème. Faut-il la réformer? Faut-il l'abolir? Etc. Anybody who will protect or defend the blasphemer, he is also the blasphemer. So we are blamed as blasphemer if we will stand behind the blasphemer. In Pakistan, the blasphemy law is misusing against anyone, any Christian especially. Christians cannot speak in front of the Muslims. We are under pressure. We are minority in Pakistan. We don't have the equal rights, whatever the Muslim has. Every Christians know in nowadays the blasphemy law is like a weapon for the Christians. So every single Christian wanted to save himself, for his family, for his children, for his business, to not to involve in this case and not to say anything, not even to ask for their own rights. Only they prefer to silence. As we said something,
as we say something, it could be used against us, our own words used against us, and charge the blasphemy. People have been assassinated, people have been lynched for this blasphemy law. There have been chapters wherein prisoners accused of blasphemy have been killed in jail, they have been killed on their way to jail, they have been killed outside the tribunal, even after being declared innocent. So once this accusation of blasphemy is upon an individual in Pakistan, it means his life, her life is in danger. Then the government of Pakistan has to reach a moment wherein they will be able to tackle it. Suleiman Tasir was governor. He was killed. Shahbaz Bhatti was the minority minister. He was killed. Both are the key person of the government. They were killed. Why? Because they both were in favor of Azija Bibi. Whoever, either I, either judge, either lawyer, or anybody, whoever will be in favor of Azija Bibi, caught by the radicals, caught by the fundamentals. You have to understand that Islam permeates the whole life of society in Pakistan. Therefore, when you touch anything that has to do with Islam, you are somehow provoking a reaction. So when the local Maulvi, when the local Muslim cleric tells the community that a person has blasphemed against the Quran, obviously the community follows. Pakistan's Christians want better protection from attacks like this. More than 170 homes in a Christian neighbourhood in Lahore were set on fire at the weekend after a Muslim man accused a Christian of blasphemy. We have been destroyed. What wrong had we done? We had done nothing wrong. It was extremely cruel. It was inhumane. We've been made homeless without any reason. We didn't do anything wrong. We committed no blasphemy. We've done nothing. Et en toute humilité, je dirais que le livre, la sortie du livre, Blasphème, a beaucoup aidé dans le fait qu'elle soit encore en vie, parce que ce livre est sorti dans plus de 12 pays désormais. Une énorme pression de la communauté internationale. J'ai eu la chance de pouvoir m'exprimer au Conseil des droits de l'homme à Genève, d'être invitée en marge du sommet de l'ONU au Conseil de sécurité pour pouvoir parler du cas d'Azija Bibi. Et parce que ce livre a ému finalement l'ensemble de la communauté internationale, il y a eu beaucoup de pression de cette communauté internationale sur le gouvernement pakistanais. Et du coup, je sais que le président Zardari, à l'époque, avait appelé spécifiquement le directeur de la prison dans laquelle Azija Bibi se trouvait pour dire « Cette femme-là, c'est un sujet sensible, donc faites en sorte qu'elle soit vivante, parce que si elle meurt, on va avoir plein de problèmes, il va falloir se justifier auprès de la communauté internationale, et on n'a vraiment pas besoin de ça pour le moment. Donc débrouillez-vous comme vous voulez, mais faites en sorte qu'elle reste en vie. » अब कोई माफी मांग ले, सच्चे दिल से माफी मांग ले, गलती करके। कितनी सच्चे दिल से माफी मांग ले, लेकिन हुजूर तो नहीं है ना जो माफ करेंगे, लिहाजा हम। लेकिन वो हमें वो चीजें तो सिखा गए ना, माफी के लिए दिल बड़ा रखना, हुकूक का। मेरे मुतालिक को क्या कहते, तो वो हक है कि तुम क्या नाम है बिल्कुल दिल बड़ा रखो, लेकिन हुजूर के मुतालिक फैसला हम तो नहीं करेंगे। जैसे कि आसिया बीबी की अगर मैं आपको साउंड बाइट अभी थोड़ी देर में ब्रेक के बाद जब आएंगे तो सुना दूंगी, वो माफी भी मांग रही है। उन्होंने कहा जी मैंने चादर से माफी मांग रही है, सवाल यही तो है ना, मुझसे माफी मांगी, मैं कैसे माफ करूंगा? सवाल जी मैं तो माफ करने का हक रखता नहीं, इसलिए कि हुजूर की गुस्ताखी की उसमें। Je pense qu'Azija Bibi est une femme extrêmement courageuse parce que je ne suis pas sûre que beaucoup d'entre nous auraient pu tenir ce qu'elle a vécu, les mépris quotidiens, les conditions de détention atroces
digne d'un animal, pas d'un être humain. Et malgré tout, elle a toujours gardé la foi, elle a toujours cru en sa libération, elle a toujours cru en Dieu, en la justice de son pays, mais aussi la justice divine. This is our clerics behind all this situation, and people follow them blindly. Whatever they are saying, it is right. That's why taking action against blasphemers, they consider as a religious obligation. Here in Muslim seminaries, madrasas, they are preaching hatred against non-Muslim citizens of the country. This is happening. When anybody will ask, they will not say anything. They say, no, we are doing like this. We have no problem with any religion. ಕ್ರೈಸ್ತ ದಂಪತಿ ಮೇಲೆ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಬಳಿಕ ಜೀವಂತ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಘಟನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮೃತ ಕ್ರೈಸ್ತ ದಂಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಕುರಾನ್ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಾಹೋರ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಕಸೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಟ್ರಾದ ಕಿಶನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೃತರನ್ನ ಶಹಜಾದ್ ಮಸೀಬ್ ಹಾಗೂ ಇವರ ಪತ್ನಿ ಶಮಾ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಂಪತಿ ಯೂಸುಫ್ ಗುಜ್ಜರ್ ಎಂಬಾತನ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಆತ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದಂತೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದು ದಂಪತಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಗುಜ್ಜರ್ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಇದಾದ 2 ದಿನಗಳ ನಂತರ ದಂಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ಕುರಾನ್ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸದ್ಯ 50 ಜನರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. There is an international pressure, but the government has also very strong pressure from within the country, from the fundamentalists. So the government is under terrible pressure. They do not know what to do. Session judges and magistrates who are sitting as a judge in the lower courts, they are afraid. They will always give sentence whether guilty or not guilty because they have a public pressure. You see, I have been going to courts also number of time following these cases. There are a number of fundamentalists standing in the court. So there is a pressure on the judges also. And we have the history that one judge who acquitted one Christian, he was shot right after the court session. And he's dead. So all other judges are afraid. So in the lower courts, they will always prove that the person is guilty. And Azija case is just the same. And as the case goes up, they will always drag and prolong the case without giving any sentence. There will be never decision. So there is not a single case where the case is proven guilty. Even if you feel, or even if you know that she should be free, her freedom would bring other problems to any present government in Pakistan. You can see the central jail where the Azija Bibi is. We Ashik and the children and just going to see inside to the prison. Then you must stay in the car.
Because the verses of Holy Book, they say there is one God, which is Allah Almighty, and the last prophet is his last messenger. So give him full respect. If you don't give him full respect, it means the message which is given by him to us, you will not do any respect to that message. So this is the basic belief of Muslims, that they have to respect the personality of last prophet, peace be upon him. Azija is a woman suffering more than anybody, I think, under this blasphemy law. Even Pakistan has lost one of its governors, one of its ministers, only for favoring Azija Bibi. These are the glaring examples of public pressure, pressure of majority, pressure of clerics. Here was a religious cleric who openly declared Salman Taseer as deserving death for favoring Azija Bibi and declaring blasphemy law as a black law. And I think that statement of that cleric was behind killing of Salman Taseer. When my father heard about this, he was the governor of Punjab at the time, and he decided to find out why this woman had been sentenced. And when he went and met with her in jail, she was so poor, and she had covered her face because she was so petrified. And my father was very moved, and there was no evidence to prove that she was guilty at all. And he felt very strongly that this was an unjust law that is being used to discriminate. And thousands of people have been sentenced unfairly because of this law, and they are just languishing in prison. मैं अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहता हूँ, जो रहमान है और रहीम है, और मैं आया हूँ यहाँ आसिया बीबी को मिलने के लिए, और ये 1.5 साल जेल रही है, और इनको सज़ा सुनाई दी गई है, जो मैं समझता हूँ एक बड़ी सख्त और जालिम सज़ा है। और इन्होंने अपील दर्ज की है सदर पाकिस्तान को, आसिफ अली जरदारी साहब, कि इनकी सज़ा जो है माफ़ की जाए। He said she is innocent lady and asked her to write an application for the mercy. She wrote, and unexpectedly, just he said, this is the black law which could be changed as soon as possible. These are the remarks of the Salman Taseer, is cause of death. Salman had a lot of humanity about him. He had a lot of humanity about him. And he was a fearless kind of man. I had no problems. Occasionally I would tell him that, Salman, you better be careful. And he would say, any partner, don't worry, things will be fine. And, this happened. But, while I'm in no position to comment on Salman Taseer and how Allah will treat him,
Sulaiman Taseer don't know about what could be happen. He just came out of the hotel after having a dinner. As he was near to the car, the security person shot at him and he was killed in the same place. Une colère qui coûtera la vie à un homme politique de premier plan. Salman Taseer, gouverneur du Pendjab, a été assassiné il y a quelques jours dans un marché de la capitale. Son garde du corps l'a criblé de 27 balles pour avoir défendu la chrétienne Azija Bibi, condamnée à mort pour blasphème. Who killed him? Qadri, Mumtaz Qadri. He was the security guard of Sulaiman Taseer. Might be he was the agent of any fundamentals, any Muslim organizations, any radicals, and he included in the security of, special security of Sulaiman Taseer. His hero, as on very next day he was produced before the court, many lawyers showered flowers on him as terming him their hero, and even now there is a movement by some religious clerics. That movement is a movement for release of Mumtaz Qadri. The Mumtaz Qadri, killer of Governor Taseer, was also sentenced for that. The next day, his court was attacked by the lawyers as well as other people. And now the judge is in hiding and not living in Pakistan. On the outskirts of Islamabad, the father of the killer was cheered by the crowd. We all love our prophet. Today we bring flowers to Mumtaz Qadri's family because we want to show he is not alone. Oh, I know Salman very well. Salman was a very, very close friend of mine. I know Salman's family extremely well. And can you imagine that none of the clerics, a lot of whom are government servants, were willing to lead his funeral prayers? And it became a problem. Who would lead his funeral prayers? Because everybody was very scared. Here in Pakistan, this is 90% of the time when something like this of Salman happens, they may think that he has committed blasphemy. Obviously, when it comes to my father, I will speak up and I will always defend his views. I would like to, for as many people as possible, to know that my father was innocent. He did not say anything that was even vaguely blasphemous. He did not insult our religion. He did not insult our prophet in any way. He simply stood up for a defenseless and poor Christian woman who was being targeted unfairly. So I mean, I'm not an activist, but of course I will stand up for my father, as many times as I can. The most dangerous thing is you do not know who to trust. You can't trust your own security. Somebody gets up from within your own security. They have all got guns. And he shoots you. But I think that it is very possible that just for his standing up for Azija Bibi and losing his life, Allah may forgive him all the things that Salman did. A lot of people said to me
that, you're making a mistake. Don't do it. And I said no. If I don't stand up, then other people who think like me won't be able to stand up either. Et la mort de Salman Taseer, qui était musulman, m'a profondément choquée aussi, parce que je me suis dit, waouh, ils sont prêts à tuer leurs frères musulmans au nom de cette loi, parce qu'ils ont considéré qu'en critiquant cette loi et en prenant la défense d'Azija Bibi, ils ne respectaient pas l'islam. Ça m'a fait un choc également, parce que là, je me suis dit, c'est un sujet... Ça m'a fait prendre conscience que ce sujet était au-delà du sensible au Pakistan. C'est-à-dire que c'était pas juste un sujet dont on n'aimait pas trop parler, mais que c'était... Cette loi du blasphème tue. Alors, de différentes façons. Soit on est condamné, soit les extrémistes vous tuent, soit la rue s'en charge, mais dès qu'il est question de blasphème dans ce pays, vous risquez votre vie. सलमान तासीर एक बहुत जुर्रतमंद थे, उन्होंने एक अपना प्रिंसिपल स्टैंड लिया था और मैं ये समझता हूँ ये बुज़दिलाना फेल है जिन लोगों ने ये किया था और वो लोग ना कानून से बच सकेंगे ना उनको जो है कानूनी गिरफ्त से हम छोड़ेंगे। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, जिन लोगों ने सलमान तासीर के खिलाफ फतवा साजी की थी, मेरी ये अपने हुकूमत से ये अपील होगी कि उन लोगों को शामिल तफ्तीश किया जाए ताकि वो लोग जो भी अभी भी उनकी हिट लिस्ट पे हैं वो बच सकें। Today, because the daughter of Azija Bibi were with us, jail authority gave us the double time. So we spent almost 1 hour with Azija Bibi. She is physically fit and happy, and asked, please do prayer for her and do something for the freedom of her as soon as possible. When we go inside, we have a security check in 3 times till the reach of the main office of the jail authority. Just to getting the permission, we got some problems there because accordingly, only the Ashik and the daughters allowed. For me, we have had a problem to ask permission, and finally I got the permission to see the Azija Bibi. Dès que j'ai appris la mort de Salman Taseer, j'ai appelé Shabazz Bati, qui était effondré aussi, qui m'a dit « Oh là là, ça va être compliqué ». Je disais à Shabazz « Mais il ne reste plus que toi, maintenant ». Et attention, il me disait « Je sais, je sais, je sais ». When 6 months ago I campaigned to change the blasphemy law, I got a fatwa by the religious extremists that if I will propose any changes, I will be beheaded and I will be declared blasphemer. Et il savait à quel point c'était délicat, d'autant que juste avant, son copain Salman Taseer avait été assassiné. Mais pour autant, et je lui disais, mais enfin là c'est dangereux, tu devrais faire profil bas, ta voiture n'est pas blindée par exemple, les vitres, il faut changer les vitres, tu es le seul ministre du gouvernement à ne pas avoir des vitres blindées, et un jour il va t'arriver des ennuis. Tu peux pas imaginer comme ça que tu es immortel et parce que tu défends tout le monde, que ta démarche est fantastique, que tu seras protégé de ça. Et il me disait, bah, écoute, je sais tout ça, mais si je le fais pas complètement à 100%, si je m'investis pas complètement dans ce combat, je dois quitter le gouvernement. Je n'ai plus lieu d'être, je n'ai pas peur, j'ai foi en ce combat et donc je le mènerai jusqu'au bout, quitte à y laisser mon sang. Mr. Bhatti, we forgot one question in the interview. Your life is threatened. By who? And what sort of threats are you receiving? I want to share that I believe in Jesus Christ, who has given his own life for us. I know what is the meaning of cross.
and I am following of the cross. So these threats and these warnings cannot change my opinion and principles. I will prefer to die for my principle and for the justice of my community rather to compromise on these threats. Thank you. Armed men had peppered a car carrying Shahbaz Bhatti with bullets. A spokesman said Bhatti was dead by the time he arrived at Shifa Hospital, though police added that his driver escaped unharmed. Pamphlets found at the scene of the killing warned the same fate awaits anyone opposing the country's blasphemy laws, which impose the death penalty for insulting Islam. The leaflets were signed by Al-Qaeda and the Pakistani Taliban movement in Punjab province. My mom said that that day, early in the morning, he always prayed for half an hour in his own room. After prayer, he went to my mom, and my mom said that day he was a bit strange. I mean, she was looking a bit worried about my mom. Then it was 10:30, I think, that between 10 or 11, it was a small rainy day, and my mom said that he left and he went away. And she started hearing voice, just something, a rumor that something is happening, like when you fire a lot of firework you have. Car of my brother was stopping there, and the driver was somewhere hidden there. When my brother was that time bleeding from all the body, and he was sitting there, and there was Bible on one side, and then they brought him in a hospital where they found him dead. He worked for very poor people. He was the first to defend Azija Bibi. He raised his question about Azija Bibi. He was moved by the poverty of this woman, innocency of this woman, and she belongs to the most marginalized part of the society. And I mean, so young woman, when she is in the prison, he was saying that it is not acceptable. Chiedo al Signore Gesù che il commovente sacrificio della vita del ministro pakistano Shahbaz Bhatti svegli nelle coscienze il coraggio e l'impegno a tutelare la libertà religiosa di tutti gli uomini, in tal modo a promuovere la loro uguale dignità. Je dois dire que quand j'ai vu ça, ça m'a fait un choc parce que même si j'étais pas surprise, parce que il le savait lui aussi qu'il risquait d'être tué par les extrémistes religieux, mais ça m'a quand même vraiment secouée et fait beaucoup de peine parce que je me suis dit, oh là là, si Shahbaz n'est plus là, enfin ils ont réussi à tuer tous ceux qui avaient encore le courage de critiquer cette loi du blasphème et de défendre le cas de cette pauvre Azija Bibi qui n'avait pas fait de mal à une mouche, hein, jamais, qui avait juste bu un verre d'eau. Qui va reprendre le flambeau après ça? Personne. Well, first of all, he was my younger brother. We grew up in a very Christian family. And since we grew up in that time environment, our faith, our ideology was purely Christian. And my younger brother, Shahbaz,
he has some special love for the people who are persecuted. So he decided at a certain moment in his heart that he has to do something and he has to follow that. But in his main struggle, it was to bring peace in Pakistan, to protect oppressed and marginalized community of Pakistan. La famille d'Azija, avec qui j'étais en contact très proche, et Azija elle-même, via son mari, ont été littéralement effondrés quand ils ont appris la mort de Shahbaz Bhatti et se sont sentis orphelins, tout simplement. Ils m'ont investi d'une mission finalement et j'avais pas le choix. Ils m'ont dit mais on n'a plus que toi, sur qui on peut faire confiance, sur qui on peut se reposer pour nous aider, pour nous sortir de là. Donc ne nous abandonne pas s'il te plaît. Donc malgré moi, parce que moi je suis journaliste, j'ai pas l'âme de Mère Teresa, vous voyez, moi je milite pas pour une ONG des droits de l'homme. Je faisais mon job de journaliste. Mais là quand vous êtes confronté à ça, à des situations aussi intenses et particulières, vous ne pouvez pas laisser les gens comme ça, vous êtes obligé de vous investir. Et du coup j'ai repris aussi, pour pas que la mort de Shahbaz Bhatti soit complètement inutile, je me suis dit, il faut que j'aille jusqu'au bout, donc que je publie ce livre et que je fasse tout pour que Azija soit libérée, parce qu'au moins, son combat aura servi à quelque chose. Donc pour lui aussi, je continue. Salman Taseer, le gouverneur du Pendjab, et Shahbaz Bhatti, le ministre de Minorité, sont morts parce qu'ils me soutenaient. Des fondamentalistes les ont tués, c'était terrible. Même quand on tue des animaux, on n'est pas si cruel. Je pense à leur famille, je pleure en pensant à eux. Grâce à Ashik, mon mari bien-aimé, grâce aux avocats qui s'occupent de moi au risque de leur vie, grâce à des personnes qui doivent pour leur sécurité demeurer inconnues, je peux vous écrire aujourd'hui depuis la cellule où l'on m'a enterrée vivante, pour vous demander de m'aider, de ne pas me laisser tomber. J'ai besoin de vous. If this issue is forgotten, then I think it's more possible that Azija Bibi could be killed in jail, that Azija Bibi could be freed from jail. So put to what could happen if this issue is forgotten, I think in the context of Pakistan it could be worse for Azija Bibi that the world stops reminding the government that there is an innocent person in one of their jails. Here to Lahore in Pakistan because we wanted to know how Christians live in this country. They suffer discrimination by law but also by society, and we want to make sure that people in Western world know about it. That law may disappear in the future, but just if Western societies, Western democracies, Western governments keep on putting pressure on Pakistani government. They want to protect human rights, protect freedom of religion, but they will only do it if they feel they have the support of other countries and also of Pakistani society.